All right, so we were discussing the first type of nonverbal communication, that is kinesics. And today we are going to start with the second type of nonverbal communication, and that is proxemics. So proxemics, it is related to how do you use space around you while you're communicating with someone, right? It is about how much distance you maintain while communicating with someone and what that distance conveys about your relationship or bond with that person. ठीक है, सो जब हम किसी से बात करते हैं तो वो जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा कितना डिस्टेंस है, हम कितना डिस्टेंस मेंटेन करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट द रिलेशनशिप और द बॉन्ड दैट वी शेयर. So, proxemics, it is a study of how we use space around to communicate the message. Proxemics is the personal space language as kinesics is the body language. ठीक है, so हमने kinesics को क्या बोला था, that it is a study of body language, right? So when we talk about proxemics, it is personal space language. Excuse me. सो प्रॉक्सिमिक्स को हमने क्या नाम दिया है, ऑल्टरनेटिव वी कॉल इट पर्सनल स्पेस लैंग्वेज. सो स्पेस जिसमें आ जाए कि कितना डिस्टेंस या स्पेस मेंटेन करते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग, सो दैट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सिमिक्स, right? So man has his own personal portable air bubble that he carries around with him. Edward T. Hall coined these air bubble or spaces as proxemics. ठीक है, एडवर्ड टी हॉल जो है, he says that we carry a air bubble with us. ठीक है, यहाँ ये spaces मतलब air bubble is a sort of a space जो हम अपने आसपास, we never ऐसे नहीं होता कि हम सारा टाइम किसी के साथ चिपक के चल रहे हैं, right? We are an individual person, we have our individual personalities, and we have a sort of air bubble that we have formulated around us, and that is the space or the distance that we maintain with people when we are around them. सो ये जो एयर बबल है, यहाँ स्पेसेस हैं, इनको एडवर्ड टी हॉल ने क्या टर्म दी है, प्रॉक्सिमिक्स की, right? And it describes 4 types of informal spaces to know human relationship. So what he does was he uses these uh, he talk about these spaces, and through that he comes to, he calculates the sort of relationship a person has with the other person. ठीक है, he calculates the distance कि when you talk to somebody how much distance do you maintain, और distance के basis के ऊपर he evaluates the human relationship and bond that those people share. ठीक है, so according to Edward T. Hall there are 4 types of spaces. First one is intimate, second one is personal, third is social, and the fourth one is public. So here we have a diagram which shows these 4 types. Okay, first one is intimate, that is physical contact, and it goes up to 1.5 feet. Then there is personal space. It starts where the intimate zone ends. ठीक है, so पर्सनल जोन वहाँ से स्टार्ट होता है. It is from 1.5 feet to 4 feet. Then we have social zone. Social zone starts where the personal zone ends. So it is from 4 feet to 12 feet. And then lastly we have public zone. It starts from 12 feet and it ranges to eyesight or hearing. ठीक है, आप जितना भी दूर तक देख सकते हो, it goes up till then. So now we are going to discuss all of these 4 types one by one. First is intimate space. So in intimate space, up to 18 inches, only family members, close friends, and selected persons are allowed to enter.
ठीक है. सो इंटीमेट स्पेस जो है इसमें ह्यूमन टच ह्यूमन कांटेक्ट होता है, राइट. सो वी टेंड टू हग द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस, आर क्लोज फ्रेंड्स और आर फैमिली मेम्बर्स, हमारे पेरेंट्स हैं या अंकल्स एंड आंट्स हैं, उनको whenever we meet we tend to have a really close contact with them. Sometimes we hug them, sometimes we do a handshake with them. So that is a really close contact. So that comes under the intimate space. Intimate space is the space which is very close to each other. ठीक है. So यहाँ पे हम किस किस को allow करते हैं? Most of the times our family members, ठीक है, and that too who are close to us. And then we have really close friends, हमारे जो बहुत ज़्यादा close हैं, हमारे best friends, we allow them to enter the zone. And then lastly, there might be few selected people whom we pick and we allow them to enter this zone. Then it says that these selected people are special people as they enjoy special status. For communication, either silence or at the most whispered words are used. ठीक है, obviously because the person is in a really close contact to you, तो वहाँ पे आप you are not going to talk at the top of your voice. ठीक है, आप बहुत लाउडली बात नहीं कर सकते, यू विल हैव टू ब्रिंग योर वॉइस डाउन. और क्या होता है, या तो बहुत ही साइलेंटली आप बात करते हो और यू टेक हेल्प ऑफ विस्परिंग. You whispered the talk and you discuss the things that you want to discuss. So this happens when you share a really close bond with someone. If you are not close with someone, you cannot share intimate space with them or intimate zone with them. ठीक है, you feel reluctant and you just step back from them. So that is the reason कि हम सिर्फ the people whom we like, the people who are really close to us, हम उन्हीं को allow करते हैं that they can come into our intimate space or zone. So handshakes, yeah, pat on the back or shoulder are quite noticed in this space. ठीक है. So handshake जो होता है we do with people who are really close to us. Handshake जो है that can be used in the intimate space as well as it can be used in the personal and social space also. ठीक है. It is not like that कि handshake मतलब कि that person is really close to us. We end up making doing handshakes with the people जिनको हम ज़्यादा जानते भी नहीं हैं. Right? So this is an example of intimate space, but साथ के साथ personal space, social space में भी handshakes के examples आ सकते हैं. Then pat on the back and shoulder are quite noticed in the space. ठीक है. So ये क्या है? And these are the examples of intimate space, and it is a space that we share with really close people. Next is personal space. So personal space में क्या है? Next to intimate is your personal space extending from 18 inches to 4 feet. ठीक है. इंटीमेट स्पेस के बाद हमारा पर्सनल स्पेस आ जाता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 inches and then it goes up to 4 feet. It is meant for conversations with peers, your friends and trustworthy colleagues. ठीक है. अब क्या है यहाँ पे, पर्सनल स्पेस हम उनके साथ शेयर करते हैं जिनको हम जानते हैं, पर वी लाइक देम बट दे आर नॉट वेरी क्लोज टू अस. ठीक है. वी ट्रस्ट दीज पीपल, दे कैन बी आर ट्रस्टवर्दी कलीग्स एज वेल. ठीक है. आप वर्क प्लेस पे जिस जगह पे आप काम करते हो वहाँ पे जो आपके को वर्कर्स हैं हु आर वेरी क्लोज टू यू, उनके साथ आप पर्सनल स्पेस शेयर करते हो. ठीक है. दैट इज अ कॉन्टैक्ट which is again close but not really close कि आप you cannot compare it with intimate space then, because it is different. So if it is very close, your colleagues can also be a part of your, they can enter your intimate space if they are very close to you. And then your friends are there, and if see when you were in your school, so there used to be friends who were really close to you. ठीक है. एक या दो या कुछ ऐसे friends होते थे जो बहुत close होते थे. So with them we could share intimate space. On the other hand, there were all other classmates जो class में आते थे, हमारा हाय हेलो होता था उनके साथ, बट
We never used to share really close, space with them. We used to maintain a distance from them. So वो क्या है, वो पर्सनल स्पेस है कि ओके वी मीट देम एवरी डे वी डू हेलो एंड हाई विद देम, वी आस्क देम हाउ इज, like simple questions, we interact with them on daily basis, but they are not very close to us. So here talking is permitted in spontaneous and unprogrammed way, in a relaxed and casual mode. So यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं होता. When you are communicating with someone, it is not so that it is going to be planned. It is something which is unprogrammed. It is spontaneous. जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है, you can talk about any random thing spontaneously. जो आपके दिमाग में आ रहा है, you are discussing, and the person you are discussing those things with, उसके दिमाग में जो भी आ रहा है, तो वो continuously जो है वो डिस्कशन चलता रहता है, and it is in a relaxed way, वेरी कैजुअल मूड. जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम कन्वर्सेशंस करते हैं आसपास के लोगों के साथ, तो वो क्या है, ये उनके साथ हम जैसे पर्सनल स्पेस में बात करते हैं. सो दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ दिस प्रॉक्सिमिक्स. थर्ड टाइप इज सोशल स्पेस. Now, social space, it extends from 4 to 12 feet and is used for formal and official relationships. ठीक है. अब जो सोशल स्पेस है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इसको फॉर्मल चीज़ों के लिए, ठीक है, इफ़ वी हैव अ फॉर्मल बॉन्ड विद समवन, या मेजरली वील टॉक अबाउट वर्क प्लेस. यहाँ पे ऑफ द वर्क प्लेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे you cannot come in really close contact with someone. You can do that, but only with the people who are close to you. ठीक है. You have been working with a colleague for like 5 years, 4 years, and you know that person really well, and you share a really good bond with each other. उनके साथ आप डेली बेसिस पे आप बैठते हो, उठते हो, अपना लंच you do it together. So you are close to them. So there you can share your personal space with them, but majorly at your workplace you end up sharing social space with people, because most of the bonds that we have at a workplace, they are formal bonds. ठीक है, या हमारे वो official relationships होते हैं. So here the space that you share is from 4 feet minimum to maximum 12 feet. Most of the business is done within this area. While feelings and emotions are shared in intimate or personal zone, thinking rules over emotions in the social space. So यहाँ पे क्या है कि मेजरली वी जस्ट टॉक अबाउट बिजनेस. हम कोई इनफॉर्मल ज़्यादा बातें नहीं करते हैं. टू द पॉइंट डिस्कशंस होती हैं, जो रेलिवेंट है चीज़ें उन्हीं की डिस्कशन होती है, जो टास्क दिए गए हैं. सो वट एवर इज रिलेटेड टू द बिजनेस और द वर्क इज डिस्कस्ड इन दिस स्पेस. Moreover, जो feelings and emotions हैं, that we can share with our close friends or friends in the intimate zone या फिर personal zone. ये दोनों zones में we can talk about our emotions and feelings and ideas बहुत आराम से. लेकिन social space की जब बात करते हैं, तो social space में जो हमारा thinking है, it rules over emotions. So thinking is given more importance. Your discussion related to your work is given more important. So you don't talk about random things here. Everything that you talk is planned. So most of the communication in social spaces with reason and planning. If you compare it with personal space में क्या था? Here talking is permitted in spontaneous, unprogrammed way, in relaxed and casual mood. But यहाँ पे social space में क्या है? Most of the communication in social space is with reason and planning. यहाँ पे रीजन होगा, यहाँ पे प्लानिंग होगी. सो जब भी कोई डिस्कशन करनी है आपने किसी के साथ, आप पहले अपने दिमाग में सारी चीजें प्लान करके जाओगे. आप रैंडमली जाके कुछ भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते. यू हैव टू प्लान इट आउट कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, एंड देन यू शुड हैव अ रीजनेबल थिंग टू डिस्कस. ऐसे ही कोई फालतू की चीज़ आप डिस्कस करने नहीं जा सकते. So then
Compared with intimate and personal zone, communication becomes relatively formal in this space or zone. वहाँ पे क्या था? वहाँ पे बहुत ही कैजुअल थी, इनफॉर्मल थी, बहुत रिलैक्स्ड थी पर्सनल जोन में। पर अगर हम कंपेयर करें इसको इंटीमेट जोन और पर्सनल जोन में के साथ, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है ये रिलेटिवली फॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज द बॉन्ड और द पीपल जो हमारे आसपास हैं वो फॉर्मल है। हम उन्हीं लोगों के साथ इतना डिस्टेंस मेंटेन करके बात करते हैं। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, दैट मीन्स कि वो इंसान आपको थोड़ा क्लोजली जानता है, और वहाँ पे फिर आप थोड़ा इनफॉर्मल होके भी बात कर सकते हो। ठीक है, अब डिफरेंस मैं बता देती हूँ आपको। इंटीमेट जोन की बात करें तो योर बेस्ट फ्रेंड्स और द रियली क्लोज फ्रेंड्स। पर्सनल स्पेस की बात करें तो आपके जो जैसे क्लासमेट्स होते थे, ठीक है, जिनके साथ आप हर रोज मिलते थे, आप इंटरेक्ट भी करते थे, बट यू नेवर यूज टू शेयर each and everything with them. ठीक है, they were not very close to you, but they were a part of your daily life and you used to communicate with them. Third is the social space. Social space में अब जब formal रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो फॉर्मल रिलेशनशिप आपका किसके साथ था? आपके टीचर्स के साथ। ठीक है, सो टीचर्स के साथ जब आप बात करते हो तो आपका डिस्टेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फैकल्टी है जो भी कॉलेज की या स्कूल की, when you talk with them, so the distance that you share it increases, right? So this can be taken as an example for your social space. Are you getting it? Are you understanding the difference between these three? समझ आ रहा है बच्चे? तीनों चीजों में डिफरेंस समझ आया अभी तक? Is my voice audible? बच्चे, is my voice audible to you? Kindly respond. Or if you're facing any problem with your mic, just type in the chat box. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में बच्चे मैसेज भेज सकते हो, और यू कैन सेंड अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ऑन माय व्हाट्सएप एज वेल. Okay, so social space is the space that you share with people with whom you have formal relationships, formal bonds. And this is, it has a very formal pattern to it. And moreover, this has, whenever you have to talk to a person with whom you share the social space, you have to plan out the things in advance. And whenever you go and talk to them, you should, talk about reasonable, you should never talk about irrelevant things with them. Next is public space, and this is the last space. So public space of 12 feet or more up to eyesight and hearing is meant for public meetings. ठीक है, so publicly आप जब किसी को मिलते हो तो you shared the distance that is minimum of 12 feet and it can go up to eyesight or and hearing. जिस जगह तक आपको दिख रहा है या सुनाई दे रहा है, it goes up till there. Here communication. Her communication is very formal, objective, detached, and dispassionate. In this space, informal talks are avoided as public image has to be maintained. So यहाँ पे you are very much conscious about whatever you speak. You have to be very professional. You have to avoid talking about random and spontaneous things, because you have to keep in mind that your public image has to be maintained. The distance maintained by people during communication in office and elsewhere tells a lot about their relationships. Similarly, authority, power, and status can be indicated by the location of the office and its sitting arrangement. That is true. जो sitting arrangement है, that can tell a lot about uh, a person and the authority of the person or the power of the person. You can always see that अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या इंस्टीट्यूशंस की बात ही ले, बिकॉज यू
you understand the environment of this particular area. So इंस्टीट्यूशंस में या स्कूल्स में you'll see कि जो प्रिंसिपल का जो ऑफिस होता है दैट हैज़ अ डिफरेंट arrangement to it. It has different furniture. It is a single room which is allocated to the principal. Then the table and the chair are going to be different, and the interior is going to be different. And then if you have a vice principal, so size is going to be छोटा हो जाएगा as compared to the size of the office of a principal. Furniture be different hoga. So this is how you can evaluate and you can analyze the authority of a person. This shows the authority of person. जितना better और जितना बड़ा room होगा उतना ही ज़्यादा वो it shows that उतने ही high authority पे या high level पे वो इंसान है. Is that clear? So public space जो है वो 12 feet और उसके ज़्यादा हम जितना भी up to our eyesight and hearing power, it goes till there. So this is all about these four spaces. First one is intimate, जिस पे physical contact और it goes up to 18 inches. इसके बाद personal space, intimate is which we share with very close friends, personal is which we share with the people whom we trust, but they are not the ones that they are very very really very close to us. Then we have social space. It is the space where we form where we discuss or where we interact with people with whom we share formal bonds. Lastly, we have public space. It can be used for public meetings, for public appearances. Here you have to make sure that your public image is, going out well, and you have to be very careful about it. So जो भी आप बात करते हो वो बहुत फॉर्मल होती है और आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑलरेडी एंड दिस इज ऑल्सो प्लान्ड एंड इट हैज़ टू बी वेरी रीजनेबल. राइट. सो जो हमारे पर्सनल स्पेस या इंटीमेट स्पेस थे वो वहाँ पे कैजुअल या रैंडम या स्पॉन्टेनियस बातें हो सकती थी, पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें सोशल स्पेस और पब्लिक स्पेस के साथ, तो सोशल एंड पब्लिक दोनों में ही वी हैव टू make sure that whatever we are talking, it has logic, it has relevant material to it, it has some sort of objective. So ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. I hope it is clear. If you have any doubts, you can raise your hand and I'll end the session here only. No doubts to anyone? All right then. Thank you for joining this class, Pichu.